Hello and welcome to All Things Psychology, a channel where we get you toppers insight on various important exams in psychology from across the country. My guest for today is currently pursuing MSc in Clinical Psychology from Christ Bangalore. Please welcome Isha Shukla. Hello, Isha. Hello, hi everyone. How are you doing? How's Christ? How's everything going? I'm doing good. Christ is hectic as always, but I love it is difficult to cope up, but you will love It being just here. gives you an opportunity to grow, I feel, and that is what we are looking forward to. Yes, it definitely gives you an opportunity to grow up. Like yesterday, only one of my teachers said, crisis is a good thing. So that's what you learn at Christ, that crisis is a good thing. I believe those are very kind words. Like, so much to learn from those words and so much to carry on from this point forward. So, Isha, tell our audiences a little bit about yourself. So I am pursuing MSc in clinical psychology, and I have been interested in psychology since my 11th. And then I didn't get so one of the things that I really want to put forward is the fact I wasn't able to get into any of the DU college during my UG program for psychology honors. So I pursued BA program from Bhimrao Ambedkar College, and that journey was very very weird, if I have to say that, because it was a roller coaster basically of emotions and of the desire to be into a proper psych department college. So that's how I that is how I describe my UG journey. So, Isha, coming to the selection process at Christ for masters, um, how many stages are we looking at, and how did you prepare for each stage? So basically, we have two stages, and so basically, first we have an entrance test that is most probably going to take place online, and so you have an MCQ questionnaire where you have to keep your camera on, and you just need to go through the questions. And the second stage is interview, and the interview has two parts. The first part includes the interview. The two of the professor will be asking questions, and the second part include they will give you a topic on the spot, and you have to share whatever your opinions and your thought about that topic. All right. So, the second part, I believe, is called the micro presentation, which almost everyone Yeah. gets confused of. कि होगा कैसे ये? So, any tips for the micro presentation? So basically, micro presentation it's not very difficult as a concept, because when you hear the word micro presentation, हमें लगता है कि पता नहीं कैसे क्या आ गया, but it's not that. It's basically they are going to give any topic पूरे साइड के उसमें से हिसाब से तुम्हें कोई भी टॉपिक दे देंगे, and you just have to tell your opinion. What I feel is you just don't need to restrict yourself towards theories only. Like if you're getting a particular topic, so put forward your own opinions related to that topic also. That's what they're expecting. All right. And coming to the preparation part, how did you go about the preparation? So what I did is instead of taking one book, so there are cognitive psych, bio psych. So my main focus were on cognitive psychology and research methodology. So I took a separate for both of these topics. So Annie Anastasi was psychological testing, with many of psychological tests are there. And for cognitive, I think there were two books that I recommend. I'm forgetting the name. It's okay. Yeah, glotty. Yeah. So for cognitive psychology, glotty. So what I recommend is don't go for book wise, go for topic wise. So make a list of topics that you want to cover. Usually there's this list of topics that is easily available on Christ University's website, and start with topic wise. Like एक topic पकड़ के read the topic from the book, and then उसके बाद there are very MCQs बहुत easily available हो जाती है, जो कि UPSC के लिए prepare कर रही होती हैं. तो उतना डिफिकल्ट होता भी नहीं है. सो वो उस लेवल तक अब इफ यू एबल टू डू इट, तो इजीली ये वाला क्लियर हो जाएगा. सो व्हाट आई डिड वाज रीड द टॉपिक, उसके बाद पूरा टॉपिक को समझ लिया विद हेल्प ऑफ बुक एंड यूट्यूब वीडियोस इसमें को कुछ नहीं समझ आ पाता था, एंड उसके बाद उस टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लिए. सो दैट रियली हेल्प मी डूइंग दिस पैटर्न कि कंसेप्ट पढ़ने के बाद देन इमीडिएटली एमसीक्यू, इंस्टेड ऑफ कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया एंड फिर एमसीक्यू इकट्ठे करें.
And there's this book UGC Psych MCQ करके book है. It's easily available on Amazon. उसके अंदर they have given the MCQs topic wise only, so that really helped me. All right. So you already reflected on your resources. Apart from those already mentioned, are there any other resources that you consulted at any point? I personally feel like NCERT are the two books that you like once you start studying, वो पूरे के पूरे. Even in PG कभी-कभी कोई ऐसे topics आते हैं कि जो कि वापस से उसी से पढ़ने पड़ते, तो NCERT are the best book. Other than that, the introduction to psychology is also very quite helpful. Passer and Smith, all of these books, they are really good. So I really like Morgan and King also because मुझे वो personally उसकी language बहुत सही अच्छी लगती थी, तो मैंने वो भी कर रखा. तो I recommend that book also. All right. And Is there anything you want to add? what I want to add is like कि जो मेरा personally interest था उसमें ज़्यादा focus cognitive और research methodology पे काफी था, and then intro psych जिसके अंदर biological psychology biopsych के कुछ जो starting वाले chapters होते हैं जहाँ पे they talk about the processes. I think you should do prepared about those topics also, because MSc clinical psychology is a very बहुत ज़्यादा technical in nature है. So we have biopsych का paper, we have 2 biopsychology paper and 2 cognitive psychology. तो वो बेसिकली तुम्हारी साइंटिफिक वो चीज थोड़ा टच करते करते, बिकॉज दिस इज मोर ऑफ अ क्लिनिकल इनटू मेडिकल फॉर्म. लाइक बायोसाइक पे बहुत फोकस है, तो आई थिंक ये अगर कॉग्निटिव एंड बायो पे फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमएससी क्लिनिकल साइक प्राइस एंट्रेंस के लिए. All right. And Isha, so what is the time duration like? Because DU or Jamia mein we have these entrances, then it takes a lot of time to get the results. So is it the same for Christ? Yeah, it happens very quickly. It happens very quickly. Like I gave my exam on Thursday and my interview was on Saturday, and I got my result by the next Saturday तक मेरा result आ गया था. So इतना जल्दी इनका mostly result आ जाता है, and they don't tell you the scores basically how better you have scored, or they just tell you कि तुम्हारा तुम्हारा हो गया है और तुम्हारा नहीं हुआ, उसके ही तुम्हें एक mail आता है, and then you have to submit the fee within 1 week or 10 days. जिस दिन तुम्हें offer letter मिल गया कि that you are selected, तो उसके बाद एक हफ्ते के अंदर you have to submit the whole 1 year fees. All right. So in case like interview में, let's say I don't know an answer, so how do I deal with that situation where I'm almost in the state of panic कि मुझे आता नहीं है जो interviewer पूछ रहा है, अब what do I do? Because I'm sure this must have happened in your interview as well. Yeah, definitely. The thing is like so basically that honestly this is a very subjective thing. कौन तुम्हारे interviews दे रहा है उस पर बहुत depend करता है. So basically मेरा BA program psych था, तो when it comes to जहाँ पे जो मुझे लगा था ना कि these are the subjects जो मैंने actually में अपनी पढ़ाई में cover नहीं करे या वो करे, तो I actually told them because I have coming from a BA program, तो वहाँ पर जितना honors के बच्चों का उनका exact half हो रहा है. So I genuinely told like I don't know this because मेरे को इतना सारे topics cover नहीं हुए थे. And उसके बाद the good thing about my interview was that कि उन्होंने ना मुझसे फिर पूछना शुरू कर दिया, जैसे कि हमने abnormal psych करी है तो उसमें कौन से disorders पूछे, फिर उसी के हिसाब से उन्होंने अपना question frame करना शुरू कर दिया. So basically when it comes to panic वाला point ना, be frank that if you don't know that why don't you know, like you don't have the exposure to that information या किस reason से तुम्हें उसका answer नहीं पता, फिर उसी according to उनके questions भी mold होने शुरू हो जाएंगे. So basically one thing I found is like interview बिल्कुल वैसे move करता है जैसे तुम्हारे answers पे move करता है, because जो counter questions वो तुम्हारे answer पे ही counter questions आएंगे. So don't speak of things you are not sure about. All right. So I think that's a great tip to get started with. So any more tips from your side about the selection process? Yeah, anything to keep in mind. I personally feel like interview plays a major role, because वहाँ पे teachers like if they feel like that you have the curiosity or like you want to study psychology, उनको वो एक बार feeling आ गई ना that they want to teach you, you will be get selected. So theoretical part तो important है, but the दूसरा part interview का भी बहुत पड़ता है. तो उसके अंदर what they are not looking for is like तुम्हें facts कितने पता है, is rather तुम actually subjects में interested कितने हो. At least with my interview that was the case, because facts because you're not able to remember all of the information, and especially when it comes to interview.
उस टाइम पे तुम्हें फैक्ट्स प्रोड्यूस करने होते हैं, एंड देन उसके बाद फैक्ट्स मतलब जितने भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती वो ऑलरेडी एंट्रेंस टेस्ट में तुम्हारा चेक कर चुके हैं। तो इंटरव्यू में तुम अपनी क्यूरियोसिटी या तुम अपना पैशन टुवर्ड्स द सब्जेक्ट जितना शो कर पा रहे हो ना अपनी बातों से, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो एंड अनदर थिंग इज लाइक कि तुम्हारा यू नीड टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि तुम्हें अगर साइक लेनी है तो साइकोलॉजी ही क्यों लेनी है, एंड देन साइकोलॉजी में भी क्लिनिकल लेना है तो why are you choosing clinical only? So that is a very important thing for me. So be clear in your head that why you are selecting these subjects, and then they will ask questions तुम्हारे research के basis. तो तुम्हारा अगर if you haven't done any research it's okay, but तुम्हारा research topic मतलब तुम किस topic में ज्यादा research करना चाहते हो, तो जो तुम्हारे area of interest है ना उनको express करो. That is the only thing that works. All right. And so how did your interview look like? Because interview पे focus है. So do you remember कि how did it start and how did that day of the interview start for you? So basically the thing was, मैंने मार्च अटेम्प्ट करा था, and what I initially thought is like मैंने 2 फॉर्म्स भरे थे, मैंने मार्च अटेम्प्ट के भी भर रखे थे, मैंने अप्रैल अटेम्प्ट के भी भर रखे थे, बिकॉज मुझे अपने पे इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि आई वुड क्लियर इट फॉर मुझे नहीं था, तो मैंने 2 अटेम्प्ट के ऑलरेडी भर रखे थे. सो व्हाट द थिंग इज जब एंट्रेंस हुआ उसके बाद इट्स लाइक ओके इंटरव्यू आ रहा है. देन अगेन उस टाइम पे आई डिडंट फोकस ऑन लाइक ठीक है मुझे ना चीजें लाइक फैक्ट्स को बार मतलब इन्फॉर्मेशन को बार बार रिपीट करो मैं उसको ना मैंने साइड पे रख दिया. लाइक ओके जितना मेरे को आता है इतना आता है, मतलब इसी को मैं लेके जाऊंगी. ऑल आई नो दैट कि आई जेन्युइनली वांट टू स्टडी. मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है अब, एंड दैट टू फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी जहाँ पे मुझे करिकुलम बेसिकली मैंने ना अपना जो सिलेक्ट करा था साइट का वो करिकुलम के हिसाब से सिलेक्ट करा था. तो मेरी एक हैबिट ही हो गई थी कि ना मुझे करिकुलम इतना फैसिनेटिंग लगा था कि मैं बार बार करिकुलम ही पढ़ती रहती थी. तो इंटरव्यू से पहले मैं करिकुलम पढ़ रही थी बिकॉज दैट इज लाइक ओके दैट वाज अ मोटिवेशन फैक्टर फॉर मी, यू नो लाइक यू नीड टू देखो ये सब्जेक्ट्स पढ़ने का मन है ना, देखो ये सब्जेक्ट पढ़ने का मन है ना, तो दैट वाज द मोटिवेशन फैक्टर फॉर मी. मैं ये कर रही थी इंटरव्यू वाले दिन सुबह मैं करिकुलम पढ़ रही थी उसका. And फिर इंटरव्यू शुरू हुआ तब कैसा रहा, मतलब how did it go? So basically फॉर्मल्स पहन रखे थे, and then जो हमारे टीचर्स है they were very chilled out. Like it was like I was having a conversation about my interests and opinions about different topics in psychology. ऐसा सा मुझे मेरे लिए ऐसा ही था. तो initially तो I was nervous. So it started with questions and वो सारे थोड़े technical questions थे, but gradually उन्होंने फिर मेरे opinions उस topic शुरू कर दिए, मेरे research interest area पे पूछने लगे. तो usually there are 2 professors, दोनों बारी बारी से question पूछते हैं. Like एक पहले एक क्वेश्चन पूछता है फिर दूसरे क्वेश्चन कपल सेट ऑफ दोनों कुछ क्वेश्चन पूछते हैं. उसके बाद फिर हमें वो हमारा माइक्रो प्रेजेंटेशन का टॉपिक दे देते हैं. उसके में तुम्हें 2 मिनट देते हैं जिसमें तुम अपना सोच सकते हो और अपने थॉट्स को वो कर सकते हो. एंड वन थिंग आई लाइक कि बीच में आई वाज आल्सो टेकिंग पॉजेस, बट देन आई वाज नॉट पॉजेस में ले रही थी बट आई डिडंट गेट लाइक ओके मैंने पॉज ले लिया तो शिट खराब हो गया. वो वाला शिट मोमेंट इज इट्स ओके इफ यू आर गेटिंग पॉज. सबसे बड़ी बात है कि तुम पॉज भी ले रहे हो, तुम फैक्ट्स प्रॉपर्ली वो भी नहीं कर पा रहे तो भी इट्स ओके. जस्ट दैट यू जस्ट नीड टू पुट फॉरवर्ड योर ओपिनियंस, दैट्स ऑल. All right. And so any suggestion for people who want to start preparing for Christ right now? Because as I got to know कि the next admission session is happening somewhere in April end. So what tip here? बेसिकली अभी ना बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट द टाइम तो कोई भी न्यू चीज टॉपिक है उसको पकड़ने की कोशिश मत करो. जितना तुम्हारे पास जितना तुम्हें आता है ना सिर्फ उसी को रिवाइज करो, उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो. एंड दिमाग में ये पॉइंट रखो व्हाई यू हैव सिलेक्टेड साइकोलॉजी इन द फर्स्ट प्लेस. बिकॉज व्हाट मुझे पर्सनली लगा ना व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स हम एकेडमिक्स में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं ना कि हम एक्चुअली भूल जाते हैं कि हमने स्टार्ट ही क्यों करी थी ये जर्नी. एंड इट हैपेंस लाइक ये एग्जाम्स ये असाइनमेंट्स ये टॉपिक्स ये नहीं कवर करना है ये सब कुछ कवर करना है, उसके पूरे प्रोसेस में हम एक्चुअल में भूल जाते हैं कि हमने करियर चूज ही क्यों करा था. तो ऑलवेज keep reminding yourself why you selected this career and why you wanted to, why you are passionate about this career. These questions always help me to keep me grounded towards what I wanted to, and eventually वही इंटरव्यू में तुम्हारा रिफ्लेक्ट होता है, वही तुम्हें आगे लेके. These are the tips that I would love to give. And what are your plans for the future? Plans for the future, so basically I want to like go for with मतलब मैं अपना जो for me the target population would be adolescent and young adults and children. So basically what I want to do is like after master I don't want to study for a while.
I actually want to have a field experience जहाँ पे maybe I'm not directly as a psychologist work कर रही हूँ, but a place जहाँ पे मैं observe कर रही हूँ, observing like children, adolescent, and so what I want is like a volunteering kind of work after this for an year at least, and उसी के साथ साथ I think I will start preparing for my MPhil also. So it will be a break also, but then this is my target population. So I get to know my target population on field level also. That's my plan for the future. That is great. I think we wish you all the best and all the luck in the world to achieve whatever you're looking forward to. And that's a wrap on today's session. Thank you so much for joining in. If you like this video, give it a thumbs up, subscribe to the channel, switch on the notification bell so that you're notified each time I upload a video. And yeah, bye-bye.